अथवा संसार में अविरत मोक्ष ही नहीं अपितु बड़े बड़े महापुरुष तथा उद्धव जैसे भक्त भी वह भाव को प्राप्ति करने के लिए वांछा यानी आकांक्षा करते हैं, किंतु वे लोग प्राप्ति कर नहीं पाते, उनकी प्राप्ति नहीं। अथवा कहते जिनकी मन कृष्ण कथा में लग चुका है उन्हें शुक्र, सावित्र एवं जागृत इन तीनों जन्म की कोई आवश्यकता नहीं है। जन्म की विशेष वैशिष्ट्य नहीं दिखाया क्या भगवान की कथा में फर्स्ट चैप्टर श्लोक 24-25 बुद्धियों की भाव So what is the meaning to having a body?
are the ladies only. Aurora. After fourth का words is using there. Four words are used here. So these four words cannot be used for this. This is very sound. है Hari Bol is my voice is और coming पुरुष here. के साथ Please जो check Hare Krishna. मिलन होता है Am I ये audible जाता to you? है। आज एक विवाहिता होता है, This lead is maybe not working. है? विवाह के बाद क्या होता है, कभी कभी दिखाते हैं संसार में पति पति में मिलता नहीं, यानी मन के मिलन नहीं होता है, तो वो पति को छोड़ करके दूसरी पुरुष के पास रहता है। किंतु नहीं किया, किंतु कुछ दूर रहने पर उसके साथ क्या होता है, जब पति पत्नी के एक भाव होता है, क्योंकि विवाह नहीं होता, Okay, living relationship. नहीं जाता है। So, Hari Bol, am I audible to you? Please check. Hari Bol, please check. Am I audible to you? Hare Krishna. समाज जो जो पहले स्वीकार करते थे इसके विवाह करते, समाज सम्मान करते, स्वीकार करते। दूसरी है कभी कभी विवाह तो हुई, Sometimes what happened, ladies got married, but after some times of marriage, देखा जाता है it is seen in the society, उन दोनों के साथ मिले नहीं, so they don't have any good relationship with each other. So what they used to do, वो स्त्री क्या करती है, divorce. पति को छोड़कर So they leave that the ladies left that husband, साथ वो and she has affair with any other guys, and she used to live with any other person. है। Bec- और कुछ दिन रहने पर उसी के क्या होता है, उसमें सखिया के रूप में वो रहता है, विवाह तो नहीं होती, सखिया रूप में रहता है। So after sometimes what happens, she haven't got married with that husband, that other person, but still they are living each other. So there is this kinds of word is used here. So they have a relationship like husband wife, but she is cheating with the husband, and she is having external marital affair. External marital affair. मिलन आदि होता है, So with other person. उसके कहा जाता है External, that is called jar bhav. In Hindi it is called jar bhav, or in English it is called external marital affairs. जाति हिंदी के यार ना क्या बोलते हैं, ये समाज के अत्यंत घृण्य का है। This is the very bad relationship in the society. शास्त्रों In the Ved and scriptures, they are not accepting this. I am very thirsty. और उनके इस संसार में भी कोई सुख नहीं है, और मृत्यु के पश्चात भी So they will not get any pleasure in this world, and after that they will not get the same. नरक में जाते They will go to hell. Who has this kinds of relationship with other हैं। person? तो असाध्य चित्त जगत में But in the transcendental world, what is saying here? जार भावों के दाम्पत्य भाव से अधिक इष्टमान है। Hmm. गोपवध So in the transcendental world, the whose gopis they have married Gopavahita. So Gopavadhu. कहने की तत्पर So what is the meaning here? So the gopis who got married, तो कृष्ण के साथ but कैसे भाव रखा, but how they have living they have staying the living in the relationship with Krishna with a yar bhav, like the friendship mode. So external marital affair is called. उसके साथ कोई मानो कोई अंग संग नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी उसके प्रेम की एक भाव रखते हैं, तो एक प्रकार होता है, और दूसरी होता है अंग संगादि भी दिखाया जाता है। So there are two kinds of relationship, one physically or second unphysically. वो होता है क्या, अत्यंत जो है घृण्य कहा जाता है, घृण्य माने Very hateable. रेसिपी,
reach it. So very sinful activity. Which one? जो एक तो प्रेम प्रीति रखना उचित नहीं है, और दूसरी प्रेम प्रीति रखे, प्रेम प्रीति रख कर उसके साथ क्या हो रहा है, अंग संग आदि हो रहा है। physical relationship. First, they don't have the good relationship with the husband, and second, they are external marital affair with the other guys, and they have physical relationship with that. So this is very very cheatable, this is rigid, very sinful activity. So Vishwanath Chakravarti is saying here, he is saying this is a very bad relationship. So the word he used here, jar bhav, yar bhave. It is mentioned a shlok in the Bhava. Shukdev Goswami Pad is saying he used this word in the Srimad Bhagavatam, yar bhav. बोले ऐसे शब्द क्यों कहा गया, गोपियों के लिए ऐसे शब्द क्यों? So why he used this word for the gopis? There is a question arise here. ये बहुत महत्वपूर्ण This is very important katha. Everybody has to focus on it. कथा है। इस संसार में जितने हीन और घृण्य वस्तु होता है, So in this material world we have seen the relationship or the things we have seen which is very sinful and very bad, but in the transcendental world it is very very pious and worshipable. समझ में? हाँ, इस जगत में निंदनीय है। So in this material world it is criticism, but in the transcendental world it is worshipable. ये हो रहा है। क्यों? हाँ, इस जगत जो हम देख रहे हैं, चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन है। So whatever we are seeing in this world, this is adverse thing of the transcendental world. इस जगत में हमको जो कुछ भी दिखाई Whatever we are seeing in this material world, this is all the shadow or the adverse things of the transcendental world. Vikriti. विकृत प्रतिफलन, प्रतिफलन नहीं है, क्या दिखा है? Vikrit Pratifal. एक प्रतिफलन होता है, ये One is Pratifalan and the second is Vikrit Pratifalan. वस्तु जैसे है So- ऐसे रिफ्लेक्ट होना उसके प्रतिफलन। So whatever kind of vastu we are, the things we are seeing, it is we are seeing in the adverse condition here in this material world. होता है इसकी विकृत प्रतिफलन। So that is called, that is adverse thing or उस जगत में चित्त opposite. जगत में, गोलोक वृंदावन में In the बहुत Golok, पवित्र निर्मल रूप में सब होता है। everything is happening in the Golok Vrindavan in a very piousful. ससुख वासना नहीं है। So there is nothing kinds of sense enjoyments there. Either they are transcendental world, gopis and gopis, everything, cows and everything is poor and pious. Is completely pious. ब्रह्म संहिता में In the Brahma Samhita there is a shlok. सब चिदानंदमय है। Satchidanand, everything is transcendental Satchidanand, Satchidanandmaya. प्राकृत दिव्य उद्धाम है। That is transcendental world. और उसी धाम की भ्रांति जो है स्वयं भगवान इस धराधाम में लीला आदि की तरह प्रकट आदि So Bhagwan has, appeared all the pastime of the transcendental world in this material world. Seeing that, शुद्ध भक्त जो है, so the pure devotee, they take the relish, they take the rus in that, भक्त जो है and the non-devotee, they always criticize that. ये विषय। This is the speciality in that. भक्त जो है वो चित्त जगत की भावना की समझ नहीं पाते, Because a bhakt cannot understand the feelings of transcendental world, और भक्त जो है प्रेम के द्वारा and bhakt by the love and the ras madhurya, they realize that. जैसे Just like उद्धव ये क्या बोले, in the Mahabharata, Bhishma Pitama and other men, they are described very nicely. All the characteristics of there in the battle, उनके बाणों के द्वारा why the arrows of Arjun, पितामह के why the arrows of Bhishma Pitama, कृष्ण के वक्षस्थल कैसे हो गया? Krishna's chest was full of blood. आज समझिए, अर्जुन और भीष्म पितामह के युद्ध हो गया। Arjun and Bhishma Pitama was fighting in the battle. So what we have seen in the battle, पितामह के वो समस्त बाणों के जो है सहन करना संभव so Arjun cannot bear all the arrows of Bhishma Pitama. That's why Bhagwan Krishna himself, he took all the arrows himself on him. रक्त को क्या करते हैं? ऊपर उछाल देते हैं। Rak- और बाण आकर के तीर आकर के अर्जुन के नहीं लग करके So sometimes Krishna was he used to in the battlefield, he uplifted the chariot in the battlefield. So what happened? The arrow was coming through from the sides of Bhishma Pitama. It was attacking on the chest of Krishna because it was not bearable for Arjun. So Bhagwan got all the arrows on his chest. So there was blood was coming out. उस रक्त के बूंद देखकर
So seeing that blood of in the on the chest, Bhishma Pitama. पितामह स्तुति करते जा So Bhishma Pitama doing the stuti, istav stuti. What kind of stuti he was doing there? रहे हैं। ये स्तुति ऐसे करते जा रहे हैं, ये ब्रज में कृष्ण जब गोपियों के साथ निभृत निकुंज कुंज में जब मिलते थे, गोपियों की श्री अंग की हैं, कुमकुम गोविंद के वक्षस्थल पर लगने पर So how Krishna was looking that time, just like kumkum, when we spoke put some kumkum on the chest on somebody, so it was looking the blood drops was looking like that, and Vishnu Pitama doing stuti at that time. कृष्ण की वक्षस्थल की रक्त के बूंद देख करके और वो स्तुति करते So seeing the blood of on the chest of Krishna, Bhishma Pitama was doing stuff and stuti that time on the battlefield. He was so much praising Krishna. ज्ञान है तो ज्ञान तो है ना, अनुभव नहीं हो ज्ञान तो है ही, स्तुति नहीं करेंगे, ज्ञानी लोग स्तुति नहीं करेंगे जानते हैं? ये सब महाभागवत है, ये तो लीला कर रहे हैं, So he was Mahabhagavata, so that's why he was doing Leela. स्तुति बोलते जा रहे हैं, ठीक है? तत्व विचार में तो कहा देंगे जो कुछ कह दिया, किंतु ये सब भगवान के So these all are the parikar of Bhagwan. So that's why everybody knows everything. So just because of Ras Madhurya, he was doing this kinds of Leela in the battlefield. है ना? तेज और तेज और ताल है, बहुत तरह के विचार विचार अच्छे ताल पर स्त्री को स्त्री स्तुति करेंगे, That's why he was doing the stuti. स्त्री तो भागवत में ही आ रहा है, हम तो नहीं बोले So it is also mentioned in the Bhagavad. I'm not saying myself. कितना सुंदर, Very nice, let's go. यहाँ तक भी जयदेव गोस्वामी तो वर्णन करते हैं, कृष्ण जब रंगालय में प्रवेश किया, When Krishna entered into the Rangale, so Jayadeva Goswami is doing the stuti that's for catching the elephant. So Krishna is वृंदावन की गोपियों की so Krishna remember the pastime in the Vrindavan that so of the Vrindavan pastime he remember that time. So this is all kinds of leela is happening there. भाव So it's totally up to Bhagwan what kinds of bhav he would like to descend or appear in that time. तो अंत होता है। चलो, आप यहाँ पर जो शब्द जो बोलते So the word we were using here, this is very important word. हैं, भागवत में भी In the Bhagavad, लोग भी his shilok is quoted there. Shtokdi Goswami Pad said this. है, इसके बहुत विस्तृत There is a very deep or broad explanation is there. So why this word is used here? Yar. Yar is very very bad word. Very very ritual. Very very sinful word. हंसा शब्द, Or yar, dhansa, हंसा, dhyansa, जिज्ञासा है। jigyansa. हंसा शब्द का अर्थ क्या होता है? Jigyansa means जिसको मारने के लिए इच्छा है, who has desire to kill. ये समस्त शब्द अत्यंत घृण्य शब्द है। It's very bad तो words. यहाँ पर गोपियों के लिए ऐसे कदर्य घृण्य शब्द क्यों कहा गया? So why these words used for gopi? This is very bad word and the sinful word. What why it is used for the gopis here? तो अन्यत्र संभव नहीं है, और पारकीय भाव में रस एक अपूर्व चमत्कार से निष्पादित होता है, यही परकेत भाव This is called the parikyata because कहने से लोग थोड़ा बहुत मान लेते हैं। sometimes we used to say parikyat bhava. So people, there is no doubt, there is no bad things come in the mind of the people. But when we use the yar shabd, so people saying so much bad thoughts come in their minds. Yar bhav. पारकीय भाव तो थोड़ा बहुत So parikya bhav they can understand little bit. थोड़ा मर्यादापूर्ण शब्द भी माने, This word had some little bit dignity, किंतु जार भाव से कोई मर्यादा but there is no dignity in yar bhav. Yar shabd, words of yar. नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं, So that's why it is saying उस जगत yar में word. जो शब्द आदि है, So the words which is used in the transcendental word, कृष्ण की प्रेम माधुर्य की द्वारा सुशोभित है, these all are decorated by the prem madhurya of Krishna, or they are increasing the prem madhurya of Krishna there. के लिए ही प्रयोज्य होता है। जैसे स्त्री लंपट,
just like the Sri Lampat word is used for only for Krishna, Sri Lampat. स्त्री लंपट कहने पर ये अत्यंत घृण्य शब्द है। So Sri Lampat is very, so this word is very sinful or bad, but we cannot use this word except Krishna, द्वारकाधीश कृष्ण not the Dwarkadish Krishna, nor Mathuradish Krishna, and or neither Ram. It is we cannot use for this word for other, but only for Krishna we can use. And who is behaving this word? वाले कौन होता है? Who is gopis? वो समझता है जो So gopis are using this word for Krishna, Lampat, Stri Lampat. So it is possible in the Parkya Bhav only, प्रेम की ऐसे where घनीभूत गाढ़ लग so there is a condensed love is there for of the gopis. The Sakha, the friends of the Krishna cannot use this word. हाँ कभी कभी Sometimes प्रिय नर्म Priya Narma Sakha Surdal Shridam, they can use this word little bit. शब्द भी बोलते हैं He used these kinds of words. है। ऐसे शब्द है किनके Sometimes or somewhere it is mentioned in the scriptures also this word is used. It is possible by the Priyanam Sakha because there is nature. से कौन शब्द निकालता है उसके ऊपर निर्भर करता It is depends on the who is talking about these words, है। हाँ समझ who is talking this, who is using these words. It depends on that person. There are many kinds of words सबके लिए सुभानी है। which is not praisable for everybody, which is not good for everybody to speak. शब्द तो है This word is the same, but व्यक्ति विशेष के it द्वारा is totally depend on the person who is talking or who is speaking that words. तो ये समझते जो है These all, so it is already everything is mentioned in the Rasa Shastra. That's why yesterday I talked a little bit over on it. ये इस भाव पर के भाव से रस अपूर्व चमत्कार से स्थापित होता है। किंतु लक्ष्मी आदि के लिए इसे संभव नहीं So, but it is for the Lakshmis and other gopis, other peoples are not. This is not possible for them. है। जार भाव में है, कृष्ण के साथ मिलन So Lakshmi cannot meet in the form of Yar Bhav with the Krishna. We cannot imagine that. बिना तो बहुत ही It is very rare. It's not possible. कल्पना भी नहीं कर We cannot imagine that actually. किस प्रकार से That how Lakshmi can meet in that form with Krishna. Never. We cannot imagine like this. और ना जिन कैसे वहाँ पर प्रेम माधुर्य शब्द आदि होते हैं So many kinds of Prem Madhurya words were used there. और उसी शब्दों पे कृष्ण श्रवण करने के लिए कैसे उत्पन्न की जाए And hearing that word, Krishna was hearing that word by the gopis. Krishna was so much eager to hear. अब ये आगे कथा को हम So now we are moving forward श्रीमद् भागवत में in the Shrimad Bhagavatam. दुखी भाव के पाने की लालसा करते हैं हैं? भगवान के जो ऐश्वर्य मार्ग के भक्त भी ऐसे माधुर्य की प्रेम को दर्शन करके So the Aishwarya Bhava Bhakta of Krishna, they have this kinds of eagerness in their heart. How we can get this love? गोपस्तव किमचरं जगमास्वरूपं सारं अप्रमोदमनन्यसिद्धम् Adhirvige pivanti anusvaveva. नवं दुरापं एकान्तधाम जसस्रिय So Shrimad Bhagavatam 10th canto 44 number chapter and the 14 number shlok. एक कब की कथा है कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश कर When this shlok is this kind that when Krishna was entering into the Mathura, जो माथा की होता है so so that time the Ramanis of Mathura who has the opulence bhav, Aishwarya bhav, प्रिय भक्त है। ऐसे भक्त भी गोविंद की और प्रेम माधुर्य की प्राप्ति करने की लालसा जाती so the devotee who have the opulence bhav, the Aishwarya bhav, they also want to get the Madhurya bhav of Krishna, not even Mathura. द्वारका में वो समस्त महिषी When the Dwarika's Mahishina, जाकर के they also want to get this kinds of love. अध्याय में जाकर के रुक्मिणी सप्तभामा आदि भी So Rukmani and Satyabhama and other Mahishiyas, they also want to get this kinds of love. They have the eagerness and desire in their heart how we can get this kinds of love.
So with the Krishna, सत्यत्व भाव है। they are staying with the Krishna in the Swakyat Bhav in the Dwarika. सत्यत्व भाव को जो है निकृष्ट मान करके So seeing that the की प्रेम माधुर्य की प्राप्ति करने so they are thinking that our Swakyat Bhav is very very wretched, and they are praising the Parakiya Bhav of gopis. अभी जिस श्लोक में आ रही So the shlok we are talking about, मथुरा के जो स्त्रियां जो है so all the ladies of the Mathura, कृष्ण के दर्शन करके seeing the darshan of Krishna, कौन से कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं Dwarika Mathuradish, मधुरेश कृष्ण so they are taking the darshan of Mathuradish Krishna, अक्रूर जब because when Akrur from Vrindavan, वृंदावन के वृंदावन से Mathura ki or, when Akrur was entering into the Mathura, ही अथवा वृंदावन मथुरा के सीमा में so there is a line, there is a border of Mathura Vrindavans. When वृंदावन कृष्ण वहीं so Vrindavan Krishna he disappear from there, and the Mathuradish Krishna enter into the Mathura. कृष्ण उस अपने करिए So Mathuradish Krishna he seated on that chariot. So this is a special thing here. We have to. So this is the principle of Gaudiya Vaishnavas. वृंदावन से मथुरा So when Krishna was coming towards Mathura from Vrindavan, so what happened? There is a border of Mathura Vrindavan. So the Vrindavan Krishna, the Brajenandan Krishna, he has disappeared from there in the border, and the Mathuradish Krishna he entered. He seated on the chariot with the Akrur वृंदावन और मथुरा के जो border. बॉर्डर सीमा में जब सीमा में आ गए हैं, 10:44:14. और तब उस समय वृंदावन कृष्ण जो है So at the time to what happened, when Krishna was coming from Vrindavan to Mathura, so at the border the Vrindavan Krishna he's disappeared, and the Mathuresh Krishna he sit on the chariot. He sat on प्रवेश किया the chariot that time. में प्रवेश करने के साथ ही साथ वो मथुराधीश कृष्ण So as he entered into the line or border of Vrindavan, so this is a strange thing, and the principle of Gaudiya Siddhanta, nobody knows about it वही कृष्ण except Gaudiya Vaishnavas. Everybody is thinking that there's Vrijanandan Krishna is coming, but no, Vrijanandan Krishna is not coming there. Devkinandan Krishna is coming. Vasudev Nandan, the Mathuresh Krishna is coming. यही तो एक विशेष So this is a special kinds of pastime of Leela of Krishna. Very very confidential. इधर तो दिखाई पड़ रहा है So here we can see the same Krishna is sitting on the chariot. No, but actually it's not. He is not the same Krishna. He is the Mathuresh Krishna. इसलिए प्रकट अप्रकट लीला की एक विशेष So this is a speciality in Prakat and Aprakat Leela. लीला नहीं है पर गमनागमन नहीं होता Aparakat Leela, there is no here and go, here and there. So Mathuradish Krishna is Mathura, Brajenandan Krishna is in Vrindavan, Dwarkadish Krishna is staying in Dwarika. So all are living in the same place where they have. But in the Prakat Leela, they have to move here and there. प्रकट लीला आदि होते हैं जो गमनागमन जो हो रहे हैं वो भी ऐसे So whatever we are seeing transferring from here to here, visiting from here to there, so it is possible in this Aprakat Leela, in this Prakat Leela. अलग दिखा दिया So the same thing is happening, but for the Lok Drishti, for the general peoples, for the common peoples, people are getting doubt. So the same Krishna is coming, but it is very confidential that Brijendandan Krishna is entering into the Mathura, but it is not right that. कौन देख रहे हैं ये मथुरा की जो रमणीय So the Ramaniyas taking a darshan of Mathuresh Krishna. मथुराधीश कृष्ण So they are taking a darshan of Mathuradish Krishna. कितने दिन जो मथुराधीश कृष्ण वहाँ पर अलौकिक रूप में रहा अलौकिक कितने दिन कब से कृष्ण जो है मथुरा में अलौकिक रूप में रहा मैं जी सबको बोला अलौकिक माने Alakshit. So he, जब वसुदेव महाराज when Vasudev, कृष्ण के लेकर के जमुना पार किया when he was carrying Krishna, he was crossing the Yamuna. क्या किया So पूरी भी उस पार जाने के when he from crossing the Gokul through the Yamuna, मथुरा में लौट करके आ गए so Devkinandan Krishna coming समय जो पैर रखा पैर रखने के with Krishna, but when he put the feet on the Gokul, so the Yashodanandan Krishna, he was on the lap of Vasudev Maharaj. Yes. इसके तत्व के सिद्धांत So you have to accept this that when Krishna took birth in the Mathura, so what happened when
Vasudeva was carrying Krishna on his head. So when he was crossing and at the border of Mathura Vrindavan or Mathura or Vrindavan, so when he was entering to Gokul, so at the time what happens? Whenever he entered into the Gokul, so Gokul Krishna he was in the lap of Vasudeva, and that time Mathura's Krishna he was disappeared. But when he was returning back, so Brajendandan Krishna he was disappeared, and Mathura this Krishna he was in the lap of Vasudeva. You got? में अलग चीज रुकी। वो कृष्ण जो है वो कहाँ रहने लगे? देवकी नंदन जो है वहीं पर जब प्रवेश किया ना 14, text number 14. गोकुल में, जब वसुदेव महाराज When Vasudeva Maharaj, मथुरा को सीमा छोड़कर so when he left the border of Mathura and he went to Gokul, तो वो so at the time what happened? Mathura this Krishna he was disappeared. So Devkinandan Krishna he's disappeared from there, and Brajendandan Krishna was on the lap of Vasudeva. धाम नहीं रहेगा। So Bhagwan was staying in their dham. That's why Nitya Dham Sthiti. Bhagwan always resides in their Nitya Dham. Mathura this Krishna never go out from the Mathura. वृंदावन नहीं रहेगा। And Vrindavan Krishna always lives in Vrinda. And Dwarka this Krishna he stays in Dwarka. साबित करना है। So we have to establish this principle. यदि आप कर रहे हो ठीक है, ऐसे लोगों की समझाने So if you are saying the same things for and making understand for the common people, so no problem in that. अंश में जाकर के So the Ansh, किंतु सिद्धांत करने से यहाँ पर ये सिद्धांत तो आप फिर तकलीफ नहीं कर पाओगे क्या? जो जिस धाम के जो भगवान उस धाम में रहता है। so the same dham Bhagwan always staying in the same dham. He never goes or he never leaves his dham. Mathura this Krishna is stays Mathura. Gachami. Bhagwan himself is saying Vrindavan I have never gone, I cannot go out a step, even a single step, leaving Vrindavan. वहीं पर गतागति नहीं होगा। So there is no coming out, going out. Mathura this Krishna, Brigadier Sham Sundar never go even a single step out from the Vrindavan. अब जो बोले वो भी ठीक है। ये नंदनंदन कृष्ण जो है ये पूर्णतम है। So Nandan Krishna he is the most complete. He is the most complete form of Krishna. So there is a form complete, more complete, and most complete. पूर्णतर है और वृंदावन में Most complete. तो उसमें हो जाना ये तब So in the in the Vrindavan Krishna, in the Dwarika Krishna is complete. In the Mathura he is more complete, and in the Vrindavan he is most complete. He is Purnatam. भगवान जो है द्वारका, मथुरा और वृंदावन So the Bhagwan, so Krishna, Vrindavan Krishna, Mathura Desh Krishna, and Dwarka Desh Krishna, they always stays or lives in their dham. They never go out from them. So Shri Rupa Goswami Pad in Laghu Bhagavatam, he is describing. मथुरा में जो है मथुराधीश कृष्ण जो है वो नित्य ही So in the Mathura Desh Krishna, he always stays there. If you say that he has went away from there, so how it is we can establish the principle? No, he never go out from that there Mathura. उनके हाथ में आ गया। कौन सा? Bhajan, so when the Yashodandan Krishna, when he was Vasudev ke. वसुदेव महाराज का। So what happened when Vasudeva was carrying Krishna, the Mathura Desh Krishna, जब कृष्ण and going to the Gokul. दासी सुदिका गृह में प्रवेश So when he was entering in the entering where Krishna was warm at that place in the the Yashoda's house. So what happened? See what he seen. He saw the Brajendandan Krishna there. What? उन्होंने क्या देखा? वसुदेव महाराज जब यशोदा की प्रसूति गृह में Huh. क्या देखा? बालिका को देखा, So he saw Yogmaya. जोगनी को देखा। Yes, he saw Yogmaya there. हाँ समझिए। So when Vasudeva entered into the Gokul and the Prasuti Gire, where Yashoda give the birth to that child, so he saw that Yogmaya there. Actually, he was the Yashoda Nandan on his head. So when he put Yashoda Nandan sons Krishna is there, and he took Yogmaya on his head. Are you getting? जाकर के और ये वसुदेव महाराज उसमें मिल गया। है?
ये लोगों के समझने के लिए बहुत सरल होता है। So for making the common people, making them understand is very easy to them. जब ये लेके गए देवकी वसुदेव जी Vasudev. लेके गए, अब वहाँ दो लोग हो गए ना फिर, एक तो यशोदानंदन ऑलरेडी अरे वो तो डिसअपियर हो गए ना बॉर्डर से ही. अभी दो विचार को जो आप जो विचार कर वो विचार जो है बहुत सरल है, आपके समझ में आ जाएगा। आप समझ में नहीं आया? आप जो है सिद्धांत के समझ, आप दोनों सिद्धांत को, दोनों सिद्धांत क्या है? What the both सिद्धांत, what both principle जो है नंदनंदन में जाकर के वो क्या हो गया? merge. Vasudev Nandan or Nand Nandan, they have merged. ये तो आपके साथ You can understand this very easily. They have submerged each other. किंतु वसुदेव महाराज ने माँ जसोदा के पुत्र के दर्शन नहीं किया। But Vasudev, वसुदेव महाराज जी जब प्रसूति गृह में, when Vasudev Maharaj was entering in the Yashoda, when he was entering in the Prasuti Gira of Yashoda, so he saw Yogmaya there. So whenever he saw the Yogmaya in the Prasuti Gira, with the child who was lying beside Yashoda Mata, she was Yogmaya, she was not Krishna. यही तो कहते हैं आज ये This is the Leela happening was there. If it is, so if you have any doubt, so make it clear out. भाव रहता है देवकी और वसुदेव महाराज के हृदय में, इसलिए एक भाव रहता है। So that's why Devaki and Vasudev Maharaj have this kinds of bhav that this Krishna is my son. They have this kinds of feeling, the Pragad bhav, he is my son. ये जसोदा के पुत्र नहीं है। He is not the Yashoda's son, he is my son. महाराज ये Vasudev Maharaj, he was thinking, he is not the Yashoda's son, he is my son. और लाया किसका? Because I put him there and I carried him there. पुत्री को लेकर। So I caught the Yashoda Putri. You have to understand here. यहाँ पर भी आश्चर्य के यहाँ पर और एक भी लीला है। So there is another Leela is happened जसोदा when Mother Yashoda, जन्म दिया, she gave the birth to the child. दोनों पुत्र जन्म। माँ जसोदा को पता नहीं था Ma Yashoda was not aware about this, पुत्र के जन्म देगी पुत्री that को। she has given the birth to a child baby or the boy baby, because she was in the prasav, she was paining. In that time she was in pain. इसलिए उनकी भी पता So that's why she is not aware that I have given the birth of the lady child, girl child or the boy child. जसोदा क्या सोचती है? Yashoda was thinking, पालक बन जाए। so I have given this birth of the same child. I have given the birth the child. सुखदेव गोस्वामी पाद But Sukdev Goswami Pad is saying, जसोदा दोनों की जन्म देगी। एक पुत्र के Ma Yashoda given the birth two childs. One is boy and one is girl. अनुजा कहा गया That is why it is called Anuja. है। आज समझिए। दर्शन किसने किया? Vasudev Maharaj. क्या बोले? सुखदेव गोस्वामी दर्शन। Sukdev Goswami Maharaj took the darshan. को नेत्र से दर्शन So in the transcendental heights, he took the darshan. Sukdev Goswami. That Mother Yashoda gave the birth to the child. कृष्ण नंदन कृष्ण One is और one is Yashoda Nandan Krishna and one is Yogmaya. She gave the birth to two childs. आज किंतु जसोदा की But Yashoda was not aware about this, that I have given the birth to two childs, that I have given the birth even a child, baby girls there. और जो पुत्री जो अभी जो पुत्र जो उनके पास जो है, So the son or the child they have with them, with her, पुत्र किसका है? किसका? whose son is Yashoda ka? माँ जसोदा So that is the Yashoda child. माँ जसोदा की। That is the Yashoda baby. Yashoda Nandan Krishna is that. आज समझिए। ये संस्कृत है। So this is the principle. This is the mysterious thing here. और इन लोग के एक जो मैं जो दिया गया ये मैं जसोदा की पुत्री को लेकर के आया। So Vasudev Maharaj is thinking that I am carrying the child of Yogmaya. That I am carrying Yogmaya on my head. He is thinking like that. Still, if you have any doubt, इसलिए नंदन कृष्ण that's why Nandanandan Krishna. आज तक भी इसके लिए भी कंप्लीट चलते रहते हैं।
So there is a fight is going on with some devotees like that. No, he is the same. Mathura Krishna. Many big pandits they got fainted hearing this. सब कहते हैं देवकी नंदन। Everybody used to say Devki Nandan. Krishna is Devki Nandan. Devki gave the birth. जो नंदनंदन कृष्ण उसकी मानता नहीं, मान्यता। आज भी ब्रज के लोग भी इसी प्रकार भ्रांत में पड़ रहे हैं। देवकी ने जन्म दिया, अब माँ यशोदा ने उसको पाला। So Devki gave the birth to Krishna and Ma Yashoda nourished him. आजकल भी आज Even today, जो है अधिकांश in the Braj, there are many people they things like that that देवकी ने जन्म दिया, माँ यशोदा ने किया कि Devki gave the birth to Krishna and Ma Yashoda nourished him. वसुदेव जी ले आए कृष्ण ब्रज में आके उनका ध्यान हुए वहीं हो गए सीमा पे ही हुए सीमा सीमा नौकरी तो खाली ले आए उनको वो आ गए ना यशोदा ने आ गए कि सुप्रिया गिरी हम जा रहे हैं तो खाली थोड़ी जाएंगे कृष्ण जब वहीं उनका ध्यान सीमा पे यशोदा ने तुमसे खाली हो गए। अरे योग माया थी ना उसमें योग माया थी. वहाँ क्या ले गए यशोदा गिरी मथुरा की सीमा में Yes. प्रवेश किया कौन? जो वसुदेव जी हैं मथुरा से जा रहे थे वृंदावन जा रहे हैं तो कह रहे हैं जब वृंदावन की सीमा में इन्होंने लेकिन ये गोकुल जी का था। हाँ गोकुल. गोकुल की सीमा में जब प्रवेश किया गोकुल के समय में जब फिर उन्होंने टोकरी खाली हो गई अरे तो टोकरी क्यों खाली हो गई? कहाँ खाली हो गई टोकरी? एक बार उधर नहीं तुम मैं उनसे बात कर रहा हूँ. कौन आ गया? नंदनंदन नहीं आ गया। फिर ये को वो योग माया है. आप नहीं समझ में आ रहा। If you are not understanding, then clear it out. वो गोकुल की सीमा में पैर रखने के साथ ही साथ है, मथुराधीश कृष्ण देवकी नंदन जो है वो क्या हो गया? अंदर जन्म हो गया, यहाँ पर आने लगे। If anybody has doubts, so please और वो make it clear out. खाली कैसे हो गया? यशोदा नंदन उसमें बैठे थे, क्या देवकी नंदन एक क्या बोला? हाँ, यशोदा यशोदा नंदन बैठ गए टोकरी में. टोकरी कल से खाली हो गई। So गुरुदेव वो जो योग माया थी, she was the same सुभद्रा. अरे सुभद्रा की बात, तो सुभद्रा कौन थी फिर? अरे सुभद्रा जो है वो बात में बताएगी, अभी जो बता रहे हैं उनसे पूछो। अरे फिर भी गुरुदेव पता तो होना चाहिए ना. सुभद्रा की बात दूसरी बात, Subhadra is another thing. So Subhadra's topic is different. जो बात चल रही है उसकी बात सुनो। So the talk is going on. We have to talk about that. उसमें क्योंकि जो सिद्धांत है उसको समझने में बहुत कठिन होता है। आपके समझ में तो बहुत होता है, ये चलो वसुदेव महाराज ले गए और अपने पुत्र के और नंदन ले गए, ये समझने की बहुत सरल होता है। किंतु सूक्ष्म विचार में देखें, यदि इस श्लोक के द्वारा आप यदि स्थापित करना चाहे, ये वृंदावन में वृंदावन की कृष्ण वृंदावन में So Vrindavan Krishna never go out from the Vrindavan. He never even a single step he go out. So Vrindavan Krishna always stays in Vrindavan. Mathuradish Krishna is staying in always Vrindavan, and Mathuradish Krishna always stays in Mathura, and the Dwarkadish Krishna always stays in Dwarika. So this is the main principle. You have to all understand this. Just like गतागतिक दिखा रहा है, आना जाना। so people you are seeing that Krishna is going and coming. So but actually they never cross the border. प्रकट लीला में गतागतिक But in the transcendental world, in the uppercut Leela, there is no going and come out. There is no going and coming. क्या क्या था? Dwarika, Mathura, and Vrindavan. There are three dhams. So no Krishna is never going here and there from there. In the Prakat Leela, Krishna is going here and there, but actually he is not crossing the border. This is the main thing. वो भी सब कुछ दंड के रखते हैं, किंतु उस लीला इसमें कोई अंतर नहीं होता, केवल लोग दृष्टि से So there is no difference between the Prakat and Aprakat Leela, but for the making the understand for the common people, it is showing this kinds of Leela is showing there. सिद्धांत उसमें होते हैं। तो लोगों की समझ में बहुत होता है, बोले हम सब उसी में जाकर समाहित नहीं हैं। ये सिद्धांत तो सबके समझ में आ जाता है। So if we say that the Ansh ये विचार अगर आप Ansh submerge into the Anshi, so if you have this kinds of philosophy, धाम को छोड़कर नहीं जाते। Dwarkadish Krishna never go out from the Dwarka, Mathuradish Krishna never go out from Mathura.
So then they are really hard to understand the peoples. आगे हम जो कथा जो श्रवण कर रहे हैं, So now the katha we are trying to hear. मथुरा के रमणीय The Mathuras, Ramaniya, the ladies of Mathura, they took the darshan of Mathuradis Krishna. देवकीनंदन के दर्शन कर रहे हैं। They are taking the darshan of Devki Nandan Krishna. वे तो कहते जा रहे हैं, That's why it's showing here. वो लोग सोच रहे हैं वही कृष्ण है, These people are thinking he is the same Krishna. लीला आदि उत्पादन करते जा रहे हैं। ये कृष्ण जब वृंदावन में थे, When Krishna was in Vrindavan, उससे कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य जो है, so that Krishna Saundarya Madhurya, उसके सौंदर्य माधुर्य में कुछ विलक्षण दिखाई पड़ता so there is a difference between Mathuradis Krishna and the Vrindavan Krishna. है। इसे कहते हैं गोपस्तव किमचन जगमस्त रूपम। ये गोपियां कौन सा से तपस्या की, What kind of austerity gopis did? कौन सा तपस्या की थी, जो नेत्र से सर्वदा उनकी माधुर्य का पान करती थी। So, Sakhi, I don't know what austerities the gopi have performed to be always drinking the sweetness of Krishna's form with their eyes. इनका रूप क्या है, What kind of form? What is the nature of his form? संसार में क्या उनके It is the essence of bodily beauty, lavanya sar. Within this material existing or above it, there is no beauty equal to his. जो किसी के What to speak of a greater beauty about, Vrajendrandan Krishna? What happened? Oh my God. पहने कपड़े से नहीं निखरता, बल्कि संसित होता है। ये जगत में In this world, किसी सौंदर्य माधुर्य कब बिखरता है, खुलता है।